Hey, welcome back guys to a new episode of Cinema Voyage, a series where I pick one country each video and explore their movies. So आज मैं बात करूंगा जापानीज मूवीज के बारे में. So the thing is, जापानीज मूवीज वेरी वास्ट एंड डाइवर्स. इसीलिए मैंने इस वीडियो को 3 सेक्शंस में डिवाइड किया है: ओल्ड क्लासिक मूवीज, मॉडर्न डे मूवीज एंड ऑफ कोर्स एनीमे. और मैंने इस लिस्ट में जापानीज हॉरर मूवीज को इंक्लूड नहीं किया है बिकॉज हम उसके बारे में बहुत कुछ जानते हैं पहले से ही. सो बिना किसी देरी के लेट्स जंप इनटू इट विद द ओल्ड क्लासिक्स. एट फर्स्ट, हाई एंड लो. दिस इज़ अ क्राइम ड्रामा मूवी डायरेक्टेड बाय अकीरा कुरोसावा. ये कहानी है एक वेल्दी बिजनेसमैन की. वाइल ही वॉज हैंडलिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट बिजनेस डील, खबर आती है कि उसका बेटा किडनैप हो गया है. बट बाद में पता चलता है कि किडनैपर ने उसके बेटे को नहीं, उसके ड्राइवर के बेटे को किडनैप कर लिया है गलती से. क्या गुंडा बनेगा रे तू? सो ही हैव टू पे ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी टू सेव द बॉयज लाइफ. बट प्रॉब्लम यह है कि उसके बिजनेस डील के लिए भी बहुत सारे पैसे चाहिए. सो नाउ ही इज इन अ मॉरल डिलेमा. दिस मूवी इज लूजली बेस्ड ऑन इवन हंटर्स नॉवेल द किंग्स रैंसम. हाई एंड लो एक बहुत अच्छी थ्रिलर ड्रामा तो है ही, एंड ऑल्सो अ ब्रिलियंट कॉमेंट्री ऑन द कंटेम्पोररी जापानीज सोसाइटी. Next up, Rashomon, directed by Akira Kurosawa. This is a crime drama movie. The movie revolves around a woman's rape and his husband's murder. और इसी इंसिडेंट को बहुत सारे पर्सपेक्टिव से दिखाया जाता है. एक बैंडिट के पर्सपेक्टिव से, द ब्राइड, द समुराइज गोस्ट एंड अ वुड कटर. समुराई को किसने मारा? Was the woman actually raped? कौन सच बोल रहा है? Through some ingenious camera work and flashback, Kurosawa reveals the complexity of human nature as 4 people recites different version of the story. Next up, Harakiri. ये एक एक्शन ड्रामा मूवी है, रेटेड 8.6. एक एजिंग समुराई आ पहुंचता है एक बहुत ही अमीर लॉर्ड के पैलेस में, एंड ही आस्क्ड टू कमिट अ रिचुअल सुसाइड ऑन देयर प्रॉपर्टी. वहाँ पे उसको पता चलता है कि उससे पहले भी एक रोनेन आया था और उसने भी यहाँ पर सुसाइड किया है. देन द लॉर्ड रिवील्स हाउ देयर पास्ट इज इंटरट्वाइंड. यहाँ पे मैं ज्यादा कुछ स्पॉइल नहीं करना चाहता, बट सम इंपॉर्टेंट लिंक्स एंड कनेक्शंस आर रिवील्ड एंड दैट सेट्स इन मोशन अ टेंस शोडाउन ऑफ रिवेंज अगेंस्ट द हाउस. Next up, the famous Seven Samurais, directed by Akira Kurosawa again. It's an action drama. एक experienced samurai को एक village को protect करने का काम सौंपा जाता है, and he also accepts it. So the samurai gathers 6 other samurais जो कि villagers को self defense सिखा सके, so they can defend themselves against the bandits. और बदले में villagers उनको खाना और shelter देते हैं. इस फिल्म के क्लाइमैक्स में है एक grand battle when 40 bandits attack the village. Next up, the face of another. ये एक ड्रामा थ्रिलर है, रेटेड 8. एक बिजनेसमैन का फेस बहुत ही बुरी तरह से डिसफिगर्ड हो जाता है, सो वो एक डॉक्टर के पास जाके एक लाइफ लाइक मास्क पहन लेता है. बट द विक्टिम begins to develop a dark personality. Meanwhile, हमको एक पैरेलल स्टोरी देखने को मिलती है ऑफ अ यंग वुमन जिसके चीक पे एक स्कार है और वो कैसे समाज के नेग्लिजेंट एंड इंसल्ट से डील करती है. सम ऑफ द बेस्ट ओल्ड क्लासिक मूवीज के बाद अब बात करते हैं मॉडर्न डे क्लासिक्स के बारे में. नेक्स्ट अप, बैटल रॉयल. इट्स अ एक्शन थ्रिलर, रेटेड 7.6. अगर तुम लोग हंगर गेम्स और स्क्विड गेम्स के फैन हो, देन यू विल लव दिस मूवी. 42 ninth graders are sent to a deserted island. They are given a map, food, and various weapons. An explosive collar is fitted around their neck. If they break the rule, the collar explodes. Their mission is to kill each other and be the last one standing. The last survivor is allowed to leave the island. If there is more than one survivor, the collar explodes and kill them all. Next up, Departure. It's a musical drama, rated 8.1. Our protagonist buys a cello, but soon enough he finds out his orchestra is disbanding. So he and his wife move to a new place where he started a new job, thinking it's a travel agency, but actually it's a mortuary. As he learns and carries out the rituals used in preparing the dead for their last rest, our hero finds his true calling in life. Next up, Memories of Matsuko. It's a comedy drama, rated 7.8. Matsuko dies in a murder. Then her nephew, So, start looking through her belongings. Her nephew, Sho, pieces together the cruel events that tank her life into a sea of bitterness. As a school teacher in her young days, Sho's aunt, Matsuko, took the fall for her student's crime. Unable to shake the resulting stigma, she was forced to live on the streets and entered in an abusive relationship. But a chance of happiness with an older flame gave her the last hope. Next up, VV. It's a romantic drama, rated 8.2. ये मूवी बेस्ड है ताइवान में. We follow the Jian family from the alternative perspectives of the 3 main family members: their father, their teenage daughter, and the young son.
Each member of this middle-class family seeks to reconcile past and present relationships with their daily lives. Such a heart-touching story, a must-watch. Next up, Audition. It's a horror mystery drama, rated 7.2. इसका rating उतना ज़्यादा नहीं है, but I personally like this movie. In this movie, we follow a widow who decided to start dating again. Aided by a film producer friend, she uses Audition for a fake production to function as a dating service. And soon enough, she begins a relationship. But the man began to realize that she is not that shy or reserved as she appears to be. The movie leads us through gradually increasing tension and a horrifying climax. Next up, another romantic drama called Love Exposure, rated 8.1. We follow a teenage boy named Yu who falls for a girl named Yoko while he was working as a photographer in an offshoot of a porn industry. It's a really fun and silly story. He thought Yoko was a lesbian, so he cross-dresses as a woman. Then a manipulative cultist arrives. A bizarre love triangle forms between all three. You can definitely check this one out for a light-hearted run. And the last one is Confession. It's a mystery drama rated 7.7. A psychological thriller drama of a grieving mother turned into cold-blooded murderer with a twisted master plan to pay back those who were responsible for her daughter's death. A very mysterious story. This movie is based on a novel written by Karnia Minato. Do check out this twisted tale. So before moving forward with anime, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दे एंड डू सब्सक्राइब बिकॉज हर हफ्ते मैं ऐसे ही मूवी रिलेटेड कंटेंट लाता रहूँगा. सो लेट्स कंटिन्यू. द फर्स्ट एनिमे इज परफेक्ट ब्लू. इट्स अ मिस्ट्री थ्रिलर रेटेड 8. ये कहानी है एक पॉप सिंगर की जो अपना करियर चेंज करके एक एक्ट्रेस बनना चाहती है. सो शी हैज टू चेंज हिज गुड गर्ल इमेज करियर में आगे बढ़ने के लिए. But she slowly goes insane when she is stalked by a obsessed fan and start hallucinating a ghost from her past. Hands down one of my favorite anime movie ever. Next up, Ghost in the Shell. ये एक sci-fi action movie है. The story revolves around a cyborg police woman जिसको तलाश है पपेट मास्टर बोल के एक पर्सन की जिसने इलीगली उसके कंप्यूटराइज दिमाग को हैक किया था. वो अपने पार्टनर की हेल्प से हैकर का पता तो लगा लेती है बट द क्यूरियोसिटी ऑफ हर ओन आइडेंटिटी सेंड्स द केस इन अ अनफोर्सीन डायरेक्शन. नेक्स्ट अप, ग्रेव ऑफ द फायरफ्लाइज. इट्स अ वॉर ड्रामा रेटेड 8.5. ये कहानी है एक भाई बहन की और ये समय है सेकेंड वर्ल्ड वॉर का. द वॉर सेपरेट्स द चिल्ड्रन फ्रॉम देयर पेरेंट्स. ये मूवी है उनके सर्वाइवल की. They struggle against all odds to stay together and stay alive. ये बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग स्टोरी है भाई. A must watch. Next up, Your Name. It's a romantic fantasy. Two strangers find themselves connected in a bizarre way. उनके बीच कुछ स्पेशल है, कुछ मैजिकल है और ये हमें तब पता चलता है when we discover their bodies are being swapped. सिचुएशन और भी कॉम्प्लिकेटेड होने लगती है जब वो लोग आमने सामने मिलने का डिसीजन लेते हैं. This is a very unique love story. Next up, of course, Spirited Away. It's a fantasy adventure rated 8.6. Directed by none other than Hayao Miyazaki. एक फैमिली ट्रिप के दौरान एक 10 साल की लड़की पहुंच जाती है एक अलग सी दुनिया में. A world ruled by God, witches and spirits. जहां ह्यूमंस को एनिमल्स बना दिया जाता है. Her mother and father are turned into giant pigs. मुलाकात होती है मिस्टीरियस हकू से जो सब कुछ एक्सप्लेन करता है. ये एक पार्क है स्पिरिचुअल बीइंग्स का and that she must work here to free herself and her family. A must-watch movie because you're up for a ride. So that's it for today guys. Do comment down your thoughts on it and also comment down some of your favorite Japanese movies. Check out these videos for more awesome content. I will see you in the next video. Till then, bye.